Hello everyone, good evening. So in this lecture I will explain the basic constructional feature and working principle of operational amplifier. So we'll talk about its equivalent circuit, we'll talk about its voltage transfer curve, we'll discuss about its characteristics, what is inverting mode, what is non-inverting input, what is inverting input. So in detail I will explain. In next video we'll discuss what are the different types of operational amplifier like inverting amplifier, non-inverting amplifier, summing amplifier. So without further delay, we'll start the session. My name is SRP. You are watching my beautiful channel. Love you, friends. ठीक है, heading दे दो OPAMP, operational amplifier. So before going to operational amplifier, let me tell you what is amplifier. Amplifier क्या होता है? It is a electronic circuit which convert weak signal to strong signal or which can amplify the input signal. So again I repeat, amplifier is a electronics device. Amplifier is a electronic circuit which converts weak signal to strong signal. मतलब input is weak signal and output is strong signal. Like this one, if this is input, output is strong signal. ठीक है? Again I repeat, definition क्या है? Amplifier is a electronics circuit which converts weak signal to strong signal. So amplifier में क्या होता है? Amplifier is made up of transistor and resistor, capacitor, and also other kind of electronics or semiconducting device or switches. So mostly we'll find transistor, capacitor, and resistor in amplifier. Are you clear? So basic element क्या है? Transistor, capacitor, and resistor. इसका purpose क्या है? Which converts weak signal to strong signal. I think definition clear. That is all about the basic of amplifier. But our topic is operational amplifier. Operational amplifier क्या है? It is a amplifier with high gain. So मतलब it is a high gain amplifier which perform some function, which perform some operation like it convert low signal or weak signal to strong signal, so input is weak, output is strong. So again I repeat, OPAMP is a amplifier. It is a amplifier but it has high gain. So constructional diagram क्या है देखो. So OPAMP has two input and one output. Here I'm mentioning two input and one output. In other way you can also define it is a two input and one output high gain amplifier. It is two input, one output high gain amplifier. In simple language you can write down. It is a two input, one output high gain amplifier. And constructional feature क्या है? इसमें दो इनपुट होता है. One is V1, second is V2 and output is V0. मतलब this side is input and this one is output. ठीक है? ये this terminal is plus and this one is minus. ये प्लस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग पार्ट और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. क्या है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. एंड माइनस पार्ट में क्या है? V2 है, so it is called inverting terminal. Is it clear? Again I repeat, it has two terminal, two input V1 and V2. One is non-inverting which is plus and inverting is minus and output क्या है? V0. Clear? Next is, for proper functioning of operational amplifier we need to give a power supply. अरे अगर power supply नहीं होगा कैसे काम करेगा? बोलो. Power supply must be there, otherwise it will not work. मतलब one is plus Vs, second is minus Vs. Power supply should be given to operational amplifier for proper functioning. I think एक basic idea आ गया क्या क्या basic constructional feature है. ठीक है? So now the point is how it works. See, the output depends on two factors. Outputs depends on input and gain. As I have told, it is a high gain amplifier. So usually in operational amplifier gain is 10 to the power 5 to 10 to the power 6. Gain कितना होता है? 10 to the power 5 to 10 to the power 6. Gain का symbol क्या है? Capital A. And input क्या होता है? The difference between two voltage V1 and V2. The difference between two voltage V1 and
V2. It is clear? So now the point is, if you want to find out V naught क्या है? Gain into input voltage. मतलब gain into input voltage. ठीक है? So gain क्या है? Gain is A, and what is input voltage? Always you have to take input voltage as the difference of the two potential. मतलब V1 minus V2. ये फॉर्मूला याद रखना, very important. So output voltage is gain into difference in input voltage. It is clear? एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैंने बोला, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए हाई गेन एम्पलीफायर. इट इज ए हाई गेन एम्पलीफायर. एक एग्जांपल ले लेते हैं. सी लेट दिस इज ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ये प्लस है, माइनस है. ठीक है, ये V1, ये आपका V2. ये क्या है? V आउटपुट. सप्लाई साइड इज देयर. सप्लाई साइड इज देयर. ठीक है. सो V आउटपुट क्या है? मैंने क्या बोला था? गेन इनटू V1 माइनस V2. अगर ये इनपुट सप्लाई, लेट इनपुट वोल्टेज इज 10 माइक्रोवोल्ट. कितना है? 10 माइक्रोवोल्ट. लेट डिफरेंस इन दिस टू वोल्टेज इज 10 माइक्रोवोल्ट. व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज? जैसे मैंने बोला था, व्हाट इज द रेंज ऑफ A? 10 to the power 5 to 10 to the power 6. We can take 10 to the power 5 or 10 to the power 6. Let we are taking 10 to the power 6. So 10 to the power 6 into what is the difference? 10 microvolt. 10 microvolt मतलब 10 into 10 to the power minus 6 volt. 10 to the power minus 6 plus 6 will be cancelled. So answer is 10 volt. So if you take A as 10 to the power 5, so it will be what? 10 to the power 5 into difference कितना है? Difference in voltage is 10 microvolt. So 10 into 10 to the power minus 5 volt. मतलब it is coming 1 volt. मतलब output voltage is coming 10 volt or 1 volt. If you are taking gain as 10 to the power 6, we are getting output voltage is 10. If you take gain as 10 to the power 5, we can get output voltage as 1. So anyhow, what you conclude? The input voltage is 10 microvolt, which is very, very small. And output voltage we are getting what? 1 volt or 10 volt. See the difference. Input voltage is very low, output voltage is high. ठीक है, ये हो गया द बेसिक एग्जांपल दे दिया. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग. क्या है? देखो, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग क्या है? ये मान लो कि एक ओपाम है, ये प्लस एंड माइनस. दिस वन इज V1 एंड दिस वन इज V2. ठीक है, ये हो गया आपका आउटपुट. सप्लाई साइड में नहीं दे रहा हूँ. दिस इज प्लस VS एंड माइनस VS. ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग मोड क्या है? नॉन इन्वर्टिंग मोड क्या है? See, non-inverting operational amplifier, inverting operational amplifier, summing amplifier. I'll explain in detail in next video. Right? So basic सिर्फ मैं बोल रहा हूँ non-inverting क्या है? मतलब this terminal will be activate and you make it ground. This one, just make it ground. ठीक है? So tell me what is the output? Output क्या है? जल्दी बोलो, output क्या होगा? Gain into input difference. So here gain is A. What is input? V1 minus of 0. So V1 minus 0 is A into V1. मतलब what you are getting? V0 is A into V1. So if input is like this, ये low signal or weak signal, output will be high signal, and there is no phase difference. Both are in same phase. Both are in same phase. अगर इन्वर्टिंग ये हो जाएगा, इन्वर्टिंग होगा मतलब क्या है? You have to activate the inverting mode and deactivate the non-inverting mode. मतलब make it ground. Make it ground. Deactivation activation का concept नहीं है. Just make the V1 ground and activate V2. ये हो गया inverting. अगर ये inverting होगा, what is the output? A into V1 minus V2. So here V2 is 0. See, sorry, V1 is 0 and V2 is V. What is the difference? What is the difference? मतलब V0 is minus of AV2. So in this case, if input is this one, output will be like this. Understood?
मतलब compare the input and output, both are out of phase. अरे both are out of phase, it is rising, it is falling, both are out of phase. The phase difference is 180 degree. That is the basic difference between non-inverting mode and inverting mode. Is it clear? Non-inverting mode में क्या होता है, there is no phase difference. देखो ये तो सिग्नल तो एम्पलीफाई हो रहा है, the strength of signal will be high, no doubt it converts low signal or weak signal to strong signal, but difference क्या है, अगर ये non-inverting होगा तो output will be like this, there is no phase difference. अगर ये inverting होगा तो this will be your output graph and phase difference is 180 degree, or else you can say out of phase. ये in phase है, in phase, ये क्या होगा, out of phase. So that is the basic difference between inverting mode and non-inverting mode. I'll explain in detail in next video. Next is, what is voltage transfer curve? Voltage transfer curve ये क्या होता है, मतलब the variation of output voltage with respect to input voltage. Okay, so that means the graph between output voltage with respect to input voltage. Input voltage क्या था, the difference of these two term potential V1 and V1 minus V2. See, in x-axis I have taken V1 minus V2, let it be Vd, and output is V0. So if you plot a graph between Vd and V0, you'll be getting straight line. क्यों straight line? क्यों straight line? अरे मैंने अभी बोला था ना, ये तुम्हारा ओपाम है, ये प्लस ये माइनस, ये V1 माइनस V2, ये V आउटपुट, यू टेक इट लेट 10 माइक्रोवोल्ट. सो व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट कितना बोला था, A इंटू चेंज इन दिस वोल्टेज. चेंज इन वोल्टेज मैंने क्या दिया इधर, लेट इट बी 10 माइक्रोवोल्ट. सो गेन मैंने ले लिया, लेट इट बी 10 टू द पावर 6. सो 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया ना. मतलब इफ इनपुट इज, अगर मान लो कि यहाँ पे इनपुट है, if input is 10 microvolt, what is output? Output is 1 volt. Similarly, if I keep on increasing the value of input voltage, the output voltage will also increases, but it will increase up to certain point, then saturation occur. Then saturation occur. Similarly, negative axis, it will increases, again saturation occur. Now the point is, you might have asked, sir, saturation क्यों होगा? That saturation will occur because मैंने जैसे बोला था, ये what is the supply voltage, plus Vs and minus Vs, मतलब the output voltage must be lies in between the range of plus Vs and minus Vs. तो ये जो range होगा, it is plus Vs, ये क्या है, minus Vs. मतलब that output voltage is directly proportional to change in input voltage or input voltage linearly up to this saturation point. मतलब that graph will be getting within this range, plus Vs and minus Vs. So that is voltage transfer curve. Clear? So now, what is the equivalent circuit of OPAMP? Equivalent circuit of OPAMP. Equivalent circuit क्या है, देखो जैसे मैंने बोला था, ये आपका OPAMP plus Vs and here it is minus Vs. So one is V1 input, other is V2. So remember, there is a input impedance Ri. So ideally Ri infinite होता है, but practically it has some internal resistance. So Ri we can say input impedance. Input क्या है, input impedance. Similarly, it has some output impedance. This is R0. ठीक है, ये क्या हो गया, R0 क्या है, output impedance. So usually R0 का वैल्यू 0 होता है आइडियल केस में. कितना होता है, 0. देखो Ri का वैल्यू आइडियली इनफाइनाइट होता है आइडियल केस में, बट R0 का वैल्यू यूजुअली 0 होता है आइडियल केस में, बट प्रैक्टिकली इट हैज सम वैल्यू, इट हैज सम वैल्यू. इज इट क्लियर? अगेन आई रिपीट, Ri इज द इनपुट इंपेडेंस. आइडियली इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है. इनफाइनाइट होगा तो ये ओपन सर्किट होगा ना, यू कैन गिव मैक्सिमम वोल्टेज. देन ये आइडियल केस में, प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होता है.
बट आर नॉट क्या है, आउटपुट इम्पिडेंस। आउटपुट इम्पिडेंस कितना होता है यूजुअली, आइडियली 0 होता है, बट यूजुअली इट हैज सम वैल्यू। देन हियर यू कैन कनेक्ट ए लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज V नॉट। अंडरस्टूड, इट इज क्लियर, ये हो गया आपका इनपुट वोल्टेज। दैट इज अ बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ओपन। और भी बहुत सारा फैक्टर है, देखो जैसे मैंने बोला RI इज इनपुट इम्पिडेंस, दैट वैल्यू इज आइडियली इनफाइनाइट। आर नॉट क्या है, आउटपुट इम्पिडेंस, वैल्यू इज 0 आइडियल केस में, बट इन प्रैक्टिकली इट हैज सम वैल्यू। सिमिलरली अदर फैक्टर, ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है, ऑफसेट वोल्टेज क्या है, ऑफसेट वोल्टेज देखो अगर इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस 0 होगा देन बाय डिफॉल्ट आउटपुट वोल्टेज विल बी 0, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ऑफसेट वोल्टेज। तो ऑफसेट वोल्टेज 0 नहीं, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है ड्यू टू सम अनवांटेड सिग्नल। ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज इसका मतलब क्या है, देखो V1 minus V2 will be 0, then by default output voltage will be 0, so that is offset voltage. But ideally offset voltage का value कितना है, 0, but practically it has some value. Okay, next some terminology we should remember. The first one is slew rate. Slew rate क्या होता है amplifier में, the rate of change of output voltage, मतलब the change in output voltage with respect to time, the change in output voltage with respect to time, right? What is its unit? Unit is volt per second or microsecond. Usually we are taking volt per microsecond, मतलब the change in output voltage with respect to step, मतलब with respect to your time, ठीक है। so ideal OPAMP में the slew rate is infinite, but practical OPAMP में usually that value is 0.5 volt per microsecond. I think it is clear. Slew rate क्या है, very simple, the voltage changes with respect to time. Next is second term bandwidth. Bandwidth मतलब क्या है, that the range of the operation of OPAMP within a range of frequency, मतलब operation of OPAMP within a range of frequency, that is called bandwidth. So usually bandwidth infinite in case of ideal operational amplifier, but practically it has some high value, not infinity, less than infinity, but it has some high value. So that means any kind of operational amplifier can operate within maximum range of frequency. The range of frequency will be very high, मतलब it can operate with high range of frequency. Are you getting my point? Ideal में इसका वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट, प्रैक्टिकल में इट हैज सम हाई वैल्यू, मतलब इट कैन एम्पलीफाई एनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब इट कैन amplify the signal, that operational amplifier OPAMP can amplify the signal or weak signal in any range of frequency, ठीक है। सो इसका वैल्यू क्या, मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट इन केस ऑफ आइडियल OPAMP एंड प्रैक्टिकल में कितना होता है, लेस देन इनफाइनाइट और हाई। नेक्स्ट इज थर्ड टर्म इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इन इनपुट विल बी 0, देन बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द आउटपुट विल बी 0, बट आइडियल केस में ये 0 होता है, प्रैक्टिकल में 0 नहीं होता है, प्रैक्टिकल में यू कैन नॉट गेट 0, so that is input offset voltage. Next is fourth one, common mode operation. देखो कॉमन मोड ऑपरेशन में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज 0 होता है, बट यूजुअली ये प्रैक्टिकल में नहीं होता है। देखो कॉमन मोड ऑपरेशन क्या है, ये आपका एम्पलीफायर है, इट हैज टू टर्मिनल, मैंने क्या बोला था, V1 and V2. If you make it ground both the terminal, what is the change in potential? 0, because both are grounded. So what is output voltage? Output voltage मैंने क्या बोला था, gain into difference in input voltage. Since input voltage 0, what is the output voltage? 0. बट ये आइडियल कंडीशन में, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल में आउटपुट वोल्टेज हैज सम वैल्यू ड्यू टू सम अनवांटेड सिग्नल, ड्यू टू सम, मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अनवांटेड सिग्नल, ड्यू टू सम अनवांटेड सिग्नल इन इनपुट साइड,
output will never be zero. It has some magnitude, it has some value. So that is common mode operation. Next is differential mode of operation. क्या है? Differential mode of operation. Differential mode of operation क्या है? देखो, अगर आपके पास एक ओपाम है, ये ओपाम, ये प्लस एंड माइनस टर्मिनल, ये V1 एंड V2, ठीक है. If V1 is, let it be 10 volt, so not 10 volt, 10 microvolt, and V2 is, let it be minus 5 microvolt, and gain factor is, let it be 10 to the power 5. What is the output? Tell me. Output is A into gain into V1 minus V2. So here gain is 10 to the power 5. V1 कितना है? V1 is 10 microvolt minus V2 कितना है? माइनस, मतलब माइनस 5 माइक्रोवोल्ट. So it will be coming 10 to the power 5 into 15 microvolt. Are you getting my point? That means if one is positive, other is negative. If negative potential is given to negative or inverting terminal of that operational amplifier, we can say it is differential mode of operation. Okay, next is most important, CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. क्या होता है कॉमन? जैसे मैंने बोला था, डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन, कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन, दोनों में गेन होता है. लेट डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन में गेन होता है A and common mode operation में gain होता है ACM. The difference between the two gain, one in differential mode of operation, other is common mode of operation. That means complete definition is, it is the ratio between the differential mode gain to the common mode gain. यूजुअली इसका जो वैल्यू CMRR का वैल्यू होता है, आइडियल केस में इनफाइनाइट, प्रैक्टिकल केस में लेस देन इनफाइनाइट, और इट हैज सम मैक्सिमम वैल्यू, राइट. सो इट हैज लॉट ऑफ एप्लीकेशन. क्या यूजेस और एप्लीकेशन है? देखो, सिग्नल एम्पलीफायर में वी कैन ऑपरेट दैट रेशियो प्रिंसिपल, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल amplifier, summing amplifier. The last part is very very important, the characteristics of OPAMP. Already I have explained this one. If you talk about, if I make a comparison between ideal operational amplifier and practical operational amplifier, what I'll get? What about input impedance? In ideal case में input impedance infinite होता है, practical में in terms of mega ohm. Mega ohm मतलब 10 to the power 6 ohm, मतलब very high. But in case of ideal it is extremely high like infinite. आउटपुट इंपिडेंस क्या होता है? आइडियल में 0 होता है, प्रैक्टिकल में इन टर्म्स ऑफ ओम होता है. एंड इंपोर्टेंट पार्ट इज गेन. गेन क्या होता है? आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है, प्रैक्टिकल केस में जैसे मैंने बोला 10 to the power 5 to 10 to the power 6. बैंडविड्थ क्या होता है? इनफाइनाइट, मतलब इट कैन एम्पलीफाई विद इन एनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट यूजुअली प्रैक्टिकल में हाई होता है. स्लीव रेट, मैंने जैसे बोला था, स्लीव रेट क्या था? द रेट ऑफ वोल्टेज और रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज और वोल्टेज चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. स्लीव रेट इनफाइनाइट होता है इन केस ऑफ आइडियल केस में, हाई होता है इन केस ऑफ प्रैक्टिकल. CMMR अभी जस्ट बोला, इनफाइनाइट इन केस ऑफ आइडियल, वेरी हाई इन केस ऑफ प्रैक्टिकल. और लास्ट में ऑफसेट वोल्टेज जैसे बोला था 0 होता है आइडियल केस में, प्रैक्टिकल में लेस देन 10 मिलीवोल्ट. ठीक है. So that is all about the basic constructional feature and working principle of operational amplifier with its characteristics. Hope you guys understood what I've explained. So thank you so much for watching my video. Thank you once again. Thank you.